हाँ ऐसे क्यों बेचैन फिरे जागेंगे जरूर ये भाग तेरे कोई जानना ये जोश तेरा कोई जानना जुनून तेरा घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Very good afternoon to all my people out there. Hold That Thought is back in 2024. It's our third show of the series and our first show of the year. We've had 3 guests so far and it seems to be spectacular. If you're watching this while at work, remember multitasking is a myth, but we'll keep it our little secret. For this show to run smoothly, we always want you to participate. So give me a few likes, show me some love, my guests some love, ask us questions, and always tell me who you are, what you do, and where you're from. Why? Because it adds value. So in every Hold That Thought episode, we bring in our tour tribe experts to meet with you all, share their stories, their work experiences, ideas, and thoughts you can hold on to. Hence, Hold That Thought. Today's show is no less. As we journey through life, the most profound lessons often come from the most unexpected places. Today, let's uncover some of these lessons with our guest. We have in the house a gentleman who is a young dynamo from Islamabad on a mission to turn your dreams into reality. With a decade of experience, he's an enabler extraordinaire, crafting success stories for individuals and organizations across Pakistan. He's been part of TorCorp, NIC, Team Up, and is the visionary founder of Gold Trainings. Assalamu alaikum, Ibraheem. Kya hai? How's it? Sorry. Assalamu alaikum, Ibraheem. Kya hal? How's it going? How are you feeling today? Ibraheem, are you on mute? Hello, Sarah. I was not, but somehow I went on mute. I don't know. Right. So I said I was feeling okay, but the introduction you gave and how you started this whole that thought episode, I think now I'm more excited, more energetic. Thank you very much for having me. Thank you, Bhetri. Thank you so much. Before we start, Ibraheem, you've recently become a father. Welcome to fatherhood. Yes. Congratulations. How does it feel? Thank you Kaisa? very much. It's good. It's been 6 months now, so very much now I am in the groove. Now? So yeah, so far it's very fulfilling, rewarding, and I don't know, amazing journey. A lot of people scared us, told us, ऐसा होगा, वैसा होगा. Alhamdulillah, ऐसा कुछ नहीं हुआ. And we've been really enjoying, both me and my partner, we're enjoying our journey so far. सही है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को. मैं भी थोड़ा सा डरा रही हूँ आपको, लेकिन it's exciting. अच्छा, Absolutely, yes. since we're talking about kids, let's start from school days. What was your most favorite time of a typical school day? Does it matter if you're good at studies? क्या कोई फर्क पड़ता है? Also, if you had to give advice to your younger self back then, so what would that advice be? Okay, Sarah, so that's very interesting question. Unlike many people, I was very keen to go to school, right? Regardless ke if I have a temperature, if I have a headache or any such issue, I would always want to go to school, primarily because my schooling was done in co-education. So Okay. it was not because my love for books or studies, but because it was co-education and our school is like it was a historical school. I mean, right now it's about 130 plus years old.
cathedral school. People like Imran Khan, Wasim Akram, a few of the Chief Justice of Pakistan, they all studied there. So I was fortunate to be in that school as well. So I Okay. always loved it. And the advice you ask to all the students whenever they see this, and if they are already watching, don't be scared. Don't take school or education perhaps as a it's a stepping stone, but don't be scared of it. Anything that you learn never goes wasted. It's as simple as that. And both school, I still have some friends from my school days, and I think you start making your first social circle from the school. True. After from your neighborhood, the school plays a key role, and enjoy the journey. Don't be afraid about the future. Don't be afraid about कि admission होगा किस college में होगा, बाहर जाएंगे यहीं पे रहेंगे, यूनिवर्सिटी कौन सी होगी. Yes, you Hmm. can plan, but उससे डरे नहीं और उसको अपने सर पे हावी ना करें. This is what I would suggest. So it's not just about grades, but about the lessons we learn and carry forward. Actually, coming to the Yeah, work yeah. life, Enjoy the journey. Enjoy the journey, the enjoy process. the journey. Actually, coming to the work life bit, you worked on development projects in rural settings. कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे वो कॉर्पोरेट सेक्टर से डिफरेंट था? जब आप कंटेंट लेके जाते हो दोनों सेक्टर्स में, तो क्या चीज़ का ख्याल रखते हो? दोनों सेक्टर्स एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं? आई थिंक बहुत कुछ सीख सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस, बट द की डिफरेंस इज के वहाँ पे आपको कल्चरल सेंसिटिविटी का ध्यान रखना पड़ता है. यू कांट जस्ट गो विद योर jargons, with your अंग्रेजी, with your international examples perhaps. Even if you want to share that, you have to contextualize it in a in that language with those case studies जो कि वो समझ सकें. मैं आपको अपनी very first example, first time when I went out of Islamabad for this kind of training, I went to Muzaffarabad and I was doing a ब्रिटिश काउंसिल्स प्रोग्राम. तो हम बहुत सी चीज़ें जो इस्लामाबाद में करते थे, एंड वी वुड जस्ट स्प्रिंकल द कॉन्सेप्ट, वी वुड जस्ट शेयर लाइन और टू अबाउट इट, एंड पीपल वुड गेट द जिस्ट ऑफ इट और वुड Hmm. meaning of it. So very first time when I went to Muzaffarabad, so it was again 4 days program. First day I was doing the session, and I could read my audience was clueless, like they were not getting what I was saying, even though मैं उर्दू में भी बोलने की कोशिश कर रहा था. खैर एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे पास जो लोकल फैसिलिटेटर थे उनका सेशन था. So what he used to do was that he would brief about the concept, and then he would bring in a cultural example, then maybe a religious example, and then people would get it. So I Okay. had to quickly adapt my methodology. This is back in 2011, if I yeah 2011. Okay. So again in rural setting, बहुत काम होने वाला. देर इज, मुझे भी पर्सनली लगता है रियल स्टोरीज ऑफ resilience will great whatever you call it is in the rural settings, from micro entrepreneurs to the young ones to the people who work with the civil society. And in the development sector, we have not just work in these rural settings but also in the urban settings as well. But yes, this is one thing that is different. You can't take the slides only, you have to, और फॉर एग्जांपल बहुत सा कंटेंट हमने वहाँ पे जो किया वो उर्दू लैंग्वेज में किया, लोकलाइज किया. तो जब हम बिजनेस ट्रेनिंग्स कराते थे तो वी वोंट टॉक अबाउट कॉस्ट एंड प्राइस, वी वुड टॉक अबाउट लागत और कीमत, राइट. Hmm. इसी तरह से फिर मैंने बहुत सा कंटेंट जो हमारे ट्रेनिंग मैनुअल्स होते हैं, आई स्टार्टेड राइटिंग देम इन उर्दू फॉर दोज ऑडियंसेस, so they could relate to it. हम उनको बुक कीपिंग नहीं सिखाते थे, उनको खाता जा सिखाते थे. सो ये कुछ चीज़ें हैं. जो आपने बात की सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन के व्हाट द कॉर्पोरेट कैन लर्न फ्रॉम इट, आई थिंक कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग्स का तो मोस्टली लोगों को आइडिया है. बट दिस इज़ वन थिंग दैट many years back Umair taught me, and he said कि Ibrahim, remember I used to discuss with him in terms of audience handling, कि audience को कैसे handle करना है, engage करना है. So I still remember, and this advice is still with me after so many years. He said, Ibrahim, remember, behind every designation there is a human being. Try to connect with the humans, not the designations. And this is what I started doing. मतलब मैं ये नहीं देखता था कि अच्छा ये गांव का या किसी tier 2 सिटी का कोई बंदा है. I would just see कि ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ. Same is Hmm. with the corporates. I won't, now when I train, I don't see कि okay I'm giving trainings to CXOs or directors or managerial level. I see ये भी humans हैं, I am also human. So we Hmm. connect at that level. So this is one thing that, and also when you talk about resilience, will great, like I said, this is one thing that corporate can learn from them. प्लस उनके एक्सक्यूजेस कोई नहीं होते. कॉर्पोरेट्स में होता है या तो टाइम ख़त्म हो गया या ऊपर से परमिशन नहीं मिली, देर इज़ अ रेड टेप और अ हायरार्की. वहाँ पे दे फाइंड सोल्यूशन. सो दे हैव व्हाट वी कॉल एन एंटरप्रेन्योरियल माइंड विच इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट. Hmm. पाकिस्तान में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे जनरली. This is my favorite example. One who have solution for every problem,
Second, people who have a problem for every solution. Unfortunately, the second category is in large quantity कि आप उनसे कोई भी solution लेके जाएंगे कहेंगे नहीं लेकिन अगर ये हो गया अगर वो हो गया and things like that. So I would say, but in rural settings, they are not like that. They usually find solutions for the problems. They are not the ones who would have a problem for every solution. अगर उनको बात समझ आ जाए, they would go for it. So I think this is one thing that corporates can learn from them. Instead of having a mindset which has a problem for every solution, just Hmm. go for the mindset that has a solution for every problem, or let's say for most problems. लव द इनसाइट्स। अच्छा, और क्योंकि हम ट्रेनिंग सेशंस की बात कर रहे थे, आप अपने ट्रेनिंग सेशंस में सिर्फ वेस्टर्न रेफरेंसेस यूज नहीं करते, ईस्टर्न रेफरेंसेस भी यूज करते हैं। वेयर डज दैट कम फ्रॉम? हाउ डू यू डेवलप इंटरेस्ट इन दैट? अपना कोई इंस्पिरेशनल अभी रिसेंट या ऑफ ऑल टाइम्स कोई रेफरेंस शेयर करें। आई थिंक उसकी एक मेन रीज़न ये है कि पीपल कैन रिलेट टू इट, ओके। सो इस वजह से भी। एंड हम्म। दूसरा ये है कि वो हदीस भी है ना कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, इल्म और हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले ले लो। हम्म। सो वो उसमें ईस्टर्न वेस्टर्न का भी कॉन्सेप्ट रहता नहीं है, इट्स अबाउट लर्निंग एंड इफ इट कैन हेल्प द अदर पर्सन और द ऑडियंस आई थिंक वी शुड यूज इट। सो आई हैव अ लॉट, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल्स में मैं आई जिम रॉन को मैंने जो कि बहुत सुना है, that guy used to be known as the millionaire maker back in 1980s in US, right? And अगर आप आज भी उसकी tape सुने, उसकी recording सुने, now he has started getting on the social media. He died in 2009 by the way, but now people are using his content. So आपको ऐसे लगता है कि जैसे वो आज ही के लिए है, but he would simplify the concepts. Local में मैंने जो है सरमत भाई से वो सीखा, सरमत तारिक मरहूम से, नदीम भाई से सीखा, उमैर एंड अ लॉट ऑफ सच पीपल। सो आई थिंक वो फिर जब आप एक कॉन्सेप्ट, बिकॉज समटाइम्स होता ही है कि आप जो काम लोकल हो रहा है आपके पास, उसको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हो सकता है वो चीज़ किसी ने बाहर अच्छे एक्सप्लेन की हो, सो आप एक्सप्लेनेशन वो लेते हैं, एग्जाम्पल लोकल लेते हैं, एंड इट काइंड ऑफ जनरली हेल्प्स द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। राइट। एंड मिक्सिंग ईस्टर्न वेस्टर्न रेफरेंसेस ऐसा भी होता है जैसे हैविंग बिरयानी, वो भी आलू वाली, मतलब नेक्स्ट लेवल। सो दैट्स अमेजिंग। अच्छा। I won't comment on that because I was born and raised in Lahore, but now I am based in Islamabad. There is this clear debate for biryani and pulao, सॉरी, हम so I तो won't get कराची into वाले हैं, it. आपको पता है हमारी बिरयानी बेस्ट होती है। अच्छा, दूसरे सवाल पे जाते हैं। जनाब, अच्छा, मजे की बात ये भी है कि आप बहुत सारे लोग जो हैं वो ह्यूमर भी ऐड करते हैं अपने सेशंस में। हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक ह्यूमर इज इन डेली लाइफ और ट्रेनिंग सेशंस में भी? योर सेशंस आर फुल ऑफ इट। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस व्हेन यू यूज ह्यूमर इन दीज सेशंस? मेनी टाइम्स क्लाइंट जो है वो बोलते हैं कि थोड़ा प्लीज लाइट रखिएगा, ह्यूमर यूज करिएगा, अदरवाइज क्या होता है? so this is what I learned from a person called Les Brown in US. He says everyone, generally people around the globe, they have closed their hearts for whatever reasons. It's financial stress, work-life balance, personal, professional. I don't know, but people, especially इन आर सराउंडिंग्स, जो जिस तरह के टाइम से लोग गुजरे होते हैं, दे हैव क्लोज देयर हार्ट्स, वो सुनना नहीं चाहते। हर एक को सुनाने के लिए बहुत कुछ है पर कोई सुनने वाला नहीं है, थिंग्स लाइक दैट। So Les Brown, I remember again many years back, 2009-10, he used to say that whenever you need to talk about something good or something of substance that you want should reach people's heart, you should use humor before that. And why so? Because when people are laughing, आपने भी शायद देखा होगा, someone makes a joke, you might not get it, but since everyone is laughing, laughter is contagious, you would laugh as well, and you would like, यार इसने क्या बोला है, you're like मुझे भी नहीं पता, right? Yeah. But the point is, so होता ये है कि unconsciously आपके वो जो guards हैं, you load those guards, and Do. then you bring in the substance, the lesson, the key concept, and by the time those guards are up again, you are already in their hearts. So this is what stood with me. And yes, I use humor a lot. I used to use humor a lot, but now I have kind of tried to balance the two. Again, giving Umair's example, Umair ये कहता था यार इब्राहिम याद रख, humor is a tool, not an objective. I think पहले जो मैं trainings कराता था pre 2017 2018, I would use humor as an objective, not as a tool. Now I have reversed the roles. And what I have realized is that you would be surprised to see how seriously people take you if you just have a little fun with them, fun with capital F. So I think, and then fun brings in a lot of human side of the people as well, especially with large groups. When you have 300 people, let's say,
uh, 30 के साथ फिर भी एक्टिविटीज और वो चीज़ चलती है for 300 people to keep them engaged. I think you need to use all sorts of tools, and humor is just one of those tools that you can use during your training sessions, or but yes, the respect element needs to be there. I'm being very honest, I used to struggle with it. I used to get some negative feedback about that as well. Sometimes I would step over the line because of my humor. So I've toned it down. I've now I'm more mature about it. What kind of humor should I use? Can I use? And I think it works really well, at least for me. But then again, और इसमें एक चीज़ मैंने एज अ ट्रेनर ये भी सीखा, अगर एग्जिस्टिंग और एस्पायरिंग ट्रेनर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए, कि जब भी आपको ये फीडबैक मिलता है ना, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, इट वाज द बेस्ट डे, दैट मीन्स यू हैव वेस्टेड इट, because people have enjoyed a lot but they haven't learned anything. But if they come to you and they say we have learned a lot, और पता ही नहीं लगा जिन गेम्स में इतना सीखा और मजाक भी किया, सब कुछ किया, now you know it's a complete feedback, they have learned something, and your humor, your activities were on the spot. So this is now I try to, this is a kind of feedback now personally I look forward to. So now Nice. I don't want people to remember me for my humor, but also the learning part. Yeah, humor is also actually not just laughter. It connects people, breaks barriers, opens hearts, like you say. Yes, yes, it Acha, does. all those people who are joining in, please ask questions if you have any. Also mention where you're from. We want to know which company you're working for rather than which city. Cities are also amazing to find out about, but company भी mention करें ताकि हम industries को add कर सकें एक अपने examples में. Ibrahim, थोड़ा सा recent past में जाते हैं COVID times में. How do you think things have changed since then? कोई दो तीन lessons जो आपने learn किए हो उस time पे other than the mastery of mute unmute button during online meetings? So I think she थोड़ा सा serious हो जाए, but first thing is what I've learned from COVID is कि कोई ज़ात है ऊपर, कोई एक, there is something else other than humans, technology, and all those advancements, AI, virtual learning, augmented reality, all those things. कोई एक चीज़ है, call it anything, you call it sun, you call it water, you call it wood, मतलब you can Ram, Jesus, God, whatever you want to call it, but there is someone else who's taking control and who's managing everything for you. So that's one lesson that I learned. कि मतलब from the biggest of jets to the remote, I mean, the easiest of the mobility was on hold. Everything was standstill. So there was a lot of lessons. A lot of people lost a lot of loved ones, and the irony was that not many people could hug their loved ones. When someone lost someone. So a lot of human side of it came out of it, of the whole process. Now the dilemma is that in generally in our settings, not a lot of these things can generally they don't sustain. So people kind of lost their lesson. Probably, I believe so. This is my opinion. I can be wrong. Around 2021, 2022, they were kind of done with it. They were so happy, and then a lot also people realized the significance of every handshake, every hug. It was because during COVID times, since we could not do any of it, so we were like, shoot, what should we do now? सो पीपल रियलाइज, मैं अक्सर, मेरी बड़ी फेवरेट एग्जांपल है कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में जनरली लोग छोटी ईद के पहले दिन पहले 2 घंटे में खुश होते हैं, और उसकी मेन वजह ये है कि वो बेशक सुन्नत के तौर पे ही, बट वो सही तरह से गले मिल रहे होते हैं, 3 दफ़ा गले मिलते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पेरेंट्स से गले नहीं मिलते, भाइयों से नहीं, बहन भाइयों से नहीं मिलते, बट एज ऑन दीज ओकेजन फॉर्मली मिलते हैं, दे फील गुड अबाउट इट. So that's why I think the human touch people missed. If we talked about these corporate work life things, so I think because of this online work, not just in Pakistan but worldwide, organizations have realized these utilities and operational expenses can be taken care of if we don't go to office, right? A lot of organizations I still know, despite 4 years of COVID, have still not returned to their office completely. Hmm. It's There are still remote works, hybrid work model worldwide, and it has opened up a lot of opportunities because of virtual world. You could even, instead of hosting me, you could have hosted someone from Middle East or from any part of the world for this session. So this is one advancement I think that has also impacted the learning part and the world in general. Very nice. और startups की अगर हम बात करें, with your experience at NIC, you were in a really critical position there, where you were coordinating with the startups as well as the investors and the entire ecosystem. If I ask you, what is it that startups must do or can do, and things that they could avoid?
Right. So talking about startups and entrepreneurship, I've been in this particular vertical for about 8 years now. I started working with startups in 2015 through different donor funded programs. हमने remote areas में भी काम किया, again हमने tier 1 cities में भी काम किया development sector के projects से. I have worked, I feel very lucky that I have worked with both high growth, high impact businesses, but we also call tech startups जो कि scalable होते हैं, and also micro enterprises, micro entrepreneurs के साथ भी मैंने बहुत काम किया. So it's two different, totally two different worlds, both of them. So what they don't need to do is, and also by the way, I'm teaching entrepreneurship in a universities here, Islamabad as well. Mm. So मैं यही उनको first thing, never ever fall in love with your business idea, because this is where most founders make a mistake because they fall in love with their idea and then they stop listening to the feedback, they stop incorporating the feedback, because उनको लगता है जो मैं सोच रहा हूँ बस वैसे ही होना चाहिए. So we need to trust the mentors and you know the professionals who have done it before us. So take feedback. One thing also they don't need to do is please scalability को ज़रा अगर आप organically देखें तो that is much more sustainable, because startup journey में तीन बहुत crucial stages होती हैं: survive, sustain, scale. A lot of startups survive, they sustain. When it comes to scalability, they sometimes mess it up. There could be a lot of reasons for it. Lack of funding generally is not the reason. Because अगर आप survive और sustain कर चुके हैं तो either you will attract an investment or you will be sustainable on your own revenue, so you don't have so investment generally is not an issue. Founders maturity is the key. किसी भी startup की success या failure में founders maturity या founder is the integral part, or the founding team if I may use the word. So also what you don't need to do is when you're making your founding team, please don't hire or recruit your friends or family as your co-founders. बिकॉज अगेन होता ये है कि वो आपके जिस तरह यूनिवर्सिटी डेज में होता था कि प्रोजेक्ट के 5 टीम मेंबर्स हैं, एक ही काम कर रहा था कोई खाना सप्लाई करता था, कोई जो है सबमिट कराता था, कोई प्रिंटिंग वगैरह करता था. तो आपको लगता है कि इसी तरह आप स्टार्टअप भी चला लेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा. इट्स अ वेरी रिगरस जॉब, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन यू. दैट्स व्हाई आई वेरी one of my favorite modules of psychological price of entrepreneurship, because you're going through that, if I may use the word, आप उस चक्की में जब पिस रहे होते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही Mm. होती. The founding team is the key. Who and make sure all the founding team members they complement each other. अगर आप मैं और हम लोग एक ही तरह की set of strengths लेके आ रहे हैं, एक ही तरह set of weaknesses लेके आ रहे हैं, so I think we are bound to fail. So Okay. this is also one thing that you don't need to do. We have to make sure that my founding team complements my weaknesses and vice versa. So this is what also, because all the investors, if you ask top investors or Mm. investment firms, they don't just invest in the idea. Idea is about 20%. 80% is the founding team or the founders. Are they prepared? So I think founders maturity is also one thing that a lot of founders startups they lack. So they should not be immature founders, and that is why we have seen a lot of tech startups के जो giants हैं, वो founders जो थे, they it was not their first startup that was a success, right? Majority you might find few examples like Zuckerberg's or Jeff Bezos or things like that, but they're exceptions, right? Majority of them they have to fail. And also, if you have to fail, then please fail fast. Don't wait and don't drag it. This is also one thing that I would request startups to don't do. That don't they hold on to it for long. Mm. They need to know. And also one last thing, you need to, as a founder you need to be clear and you need to know when to hire your first employee. Can you outsource it, or can you have someone as a co-founder instead of hiring someone? Because then if I hire someone, then of course there is a cost attached to it. Can I afford it? If not, अब पाकिस्तान में एक चीज़ होगी है, पहले नहीं थी कि now state bank gives you offer, you can pay your employees in equity. So अब ये इक्विटी शेयरिंग आ चुकी है, पहले नहीं थी. So these are few things as well. As a startup founder or founding team, you need to make that call for yourself. Nice. Ibrahim, I think when we start the second season, which is going to be a detailed version of what we're doing right now, we're going to take up entrepreneurship with you. We gotta. Sure, So, talk would about love friends to. and family. You have a Mhm. huge network of friends. You socialize a lot. You've met celebrities, carried conversations with them. How does that feel? How do you maintain the tie up over such long period? And then, if a few tips you could give me on socializing. अब सर अगर आपने ये सवाल मेरे से 2 या 3 महीने पहले पूछा होता तो मैं आपको टोटली एक डिफरेंट जवाब देता कि मैं कितनी बड़ी तोप हूँ और मैं क्या करता हूँ और आपको ये करना चाहिए.
But now, for the past 3 months, I am in a different zone, and I think इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है. Again, कोई ऊपर ज़ात है, कोई unknown है या known है, जो मुझे उन लोगों से मिलवा देती है. उस जगह पे मैं भी होता हूँ, वो भी होते हैं. So I very now firmly believe there are no coincidences. But there are few celebrities who were very kind enough, and now with whom I am even connected, also on WhatsApp as well. आई डोंट थिंक सो उसमें मेरा कमाल. अगर मैं फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ सेलिब्रिटी, मैं आपसे मिला और इस तरह मिला कि अगर आपने मुझसे कांटेक्ट रखना चाहा तो उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है. कोई बात ऐसी मेरे मुंह से निकाली होगी ऊपर वाली ज़ात ने, कोई डिस्कशन ऐसी हुई होगी कि यू माइट हैव थॉट कि दिस इज़ अ गुड पर्सन टू हैव इन कांटेक्ट विद. Hmm. Also, the first line that you talked, you have a lot of yes, Alhamdulillah, Alhamdulillah. God has been very kind that he has blessed me with a great social circle. But मुझे नहीं लगता कि we can call all of them as friends, because I think this is a very serious job. Yes, I have some very great acquaintances. This is one thing I learned from Simi Appa Simi Rahil, one of the actresses, veteran actresses. She said you can have different level of acquaintances, and people might confuse you. Okay, you know, they were very good friends, but both of them would know it. तो आपने कहा कि सोशलाइजिंग में या नेटवर्क्स कैसे बिल्ड करने थे, वन लेसन ये मैंने बानो आपा से सीखा. सब बानो कुछ या जी से जो इशफाक अहमद मरूम की मिसिस थी. व्हेन आई Hmm. मेट हर, सो शी सेड किसी के पास रहना हो तो थोड़ा दूर रहना चाहिए. सो दिस इज़ वन थिंग दैट कैन हेल्प यू बिल्ड योर नेटवर्क. कि अगर आप हर वक्त गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के डेली मैसेजेस भेज रहे हैं, आप यू नो हर इवेंट Hmm. पे बुला भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, नहीं. अगर किसी के पास रहना हो तो थोड़ा दूर रहना चाहिए. उससे होता ये है कि वो एक आपकी इज़्ज़त भी बनी रहती है, एक पर्दा भी ढका रहता है. अदरवाइज़ होता ये है कि आई माइट आइडियलाइज़ यू, एंड लेट्स से व्हेन द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग यू, यू माइट बी इन अ डिफरेंट ज़ोन, यू माइट हैड अ बैड डे, और यू आर फीलिंग अ सर्टेन वे, Hmm. एंड सम ऑफ इट इज़ आई रिसीव सम ऑफ इट इज़ एज़ वेल. तो मैं हमेशा से ये सोचता रहूँगा, यार सारा के बारे में तो ये सुना था, मुझे तो ऐसी लगती थी, ऐसी क्यों है? तो अगर आप थोड़ा-सा दूर हैं तो वो पर्दा भी कायम रहता है. आपकी गलतियाँ, आपकी कमज़ोरियाँ जो हैं वो अयान नहीं होती, लोगों की आपको अयान नहीं होती. Second, one thing that you, as part of the social networking, I believe there are three steps, simple formula. This is what I have done. I have always taken my chances. I used humor again for this. First, introduce yourself. Take your chances. By taking your chances, I mean be yourself. Like I said, behind every designation, there's a human being, right? Approach them as a human, not as someone, a business tycoon or a leader or political leader, religious leader, or any, or a showbiz celebrity. Second, try to find a common ground. A common ground could be something that you both like, or something that you both don't like, right? Or something that you like and the person doesn't like it, or vice versa. And then go in that direction, because hota ye hai, you can always start the conversation. For me, these three questions are or these three steps are conversation starters. And also, I would not ask people to have a to exchange their contacts. My only job is to, when I meet someone, I take it as a date, and the objective of first date is that you get that you are open for second date as well. ऐसा ना हो कि अगले बंदे का एक्सपीरियंस ऐसा हो गया, यार आप कॉल नंबर भी मिल जाए लेकिन आप ब्लॉक लिस्ट पे हो, या Hmm. सोशल पे आपको कनेक्टेड हो बट आपको रिस्पॉन्स ना आ रहा हो. सो टेक योर टाइम. एंड देन वन थिंग दैट आई हैव डन बिकॉज ऑफ दिस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट, I have about multi. I, now I have said it. Okay, अब कुछ लोगों को पता लग जाएगा. But Ouch. so all the but I think it will help with the larger audience. वो बात वही है कि ऊपर वाली ज़ात है, उसमें बनाना होता है. So I have Bishop. this broadcast list. What I do is every about 50 to 60 days, I send a generic test on the broadcast list. Hello, Janab. Long time haven't we haven't connected for a while. Just dropped by to say hello. Now, Janab works both for male and females, and generally, if I send it to 500 people, I'll get about 100 responses. You strike a conversation with some of them, a brief one. So आपका एक touch point हो जाता है. So let's make sure that some people know that you exist and this is what you do. And that's all. No transactions, no transactional relationship, no sense of urgency. ये अगर आप तीन चीज़ें अवॉइड करेंगे तो चांसेस हैं यू कैन कल्टिवेट गुड रिलेशनशिप्स. वन ऑफ द बेस्ट एडवाइसेस आई गॉट एंड आई वुड लाइक टू शेयर. आई एम सॉरी Hmm. थोड़ा सा लंबा आंसर हो नहीं गया. नहीं प्लीज आपका देना है. Relationships are not like restaurants where you first enjoy your food and then you pay. Relationships are like fast food places where you first pay and then you have to enjoy the meal. तो अगर आप इस चीज़ के साथ रहें, so you have to invest.
आपको लोग अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, you have to invest. This is one thing that we have realized even in marriages, love marriages, you know, they get go into divorces because they don't know that I have to pay first, right? Same is Hmm. with your business colleagues, your work colleagues, your social circle. And that does not mean कि आप हमेशा you're always there for them, but make sure you're accessible, but not easy to get. Because you need to have your own priorities straight. You need to keep your priorities straight, otherwise आपका काम affect होगा. So yeah, this is what I believe. First pay and then enjoy. My favorite one was Banu Kutsias. Also, true connection lies in the quality of your interactions, not just the quantity. So beautifully said. I think you Yeah. should keep it up and keep it going, and you should do the same thing. Networking से बात आती है HR network की. Understanding the Hmm. HR landscape is like understanding the human element in business, जो कि कॉम्प्लेक्स तो होता ही है लेकिन क्रिटिकल भी होता है सक्सेस के लिए. आपकी क्या इनसाइट्स हैं पाकिस्तानी एचआर मार्केट के लिए? बेहतरीन हो जाएगा अगर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाएं थोड़ा सा. Do you have any preferred industry? नहीं, कोई से एफएमसीजी ले लें, हेल्थ ले लें, कुछ भी. Okay. And I think so. मेरा शायद बड़ा नॉन कन्वेंशनल सा और अनएक्सपेक्टेड सा आंसर हो. आई डोंट रियली बिलीव इन एचआर. दिस इज अगेन रिसेंटली समथिंग आई लर्न फ्रॉम कामरान भाई. तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि वी वर एट अ कॉन्फ्रेंस टुगेदर और मैंने उनको बताया मुझे तो मतलब वी हैड ग्रेट डिस्कशन एंड आई ऑलवेज बिलीव key resource or key asset of any organization is their human resource. And by human resource I'm not saying their HR department, but the whole resource, right? Everyone that's working. Human capital is a key resource. And then he gave a very good term. He said, I don't like this term called HR. I would want to rephrase it into RH, resourceful humans. And if organizations have it, so no matter which industry you go to, मुझे ये लगता है कि we have to take care of the employees so they can take care of our products and services and also our customers. But मुझे कहीं कहीं मुझे ये भी लगता है कि शायद एज ए एम्प्लॉय भी लोगों की कुछ डिमांड्स बढ़ जाती हैं कुछ चीज़ें. But this is one thing I learned from Simon Sinek, that cultivate a tribe of professionals who feel excited to go to work daily, not for the work they do, but the people they work with, right? So I want to go show up at office because यार वहाँ पे आतिर भी होंगे, सारा भी होंगे, बाकी भी होंगे, गपशप होगा. So we have that kind of a chemistry. But also there's one very famous phrase that says आज़ादी पाबंदी की मोहताज है, and for that those values, those anchors, those compliance processes, SOPs that we need to follow. And I think generally पाकिस्तान में अभी एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, स्पेशली विद पीपल ऑफरिंग ऑफशोर एचआर टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स. There's a lot of scope. I'm not talking about just BPOs, Hmm. but I'm talking about other technical resources as well. So HR के डोमेन में अगर आप टेक की भी बात करें या FMCGs की भी बात करें, yes there are challenges. कुछ बाइकआउट से, कुछ import ban से, सब कुछ था. So a lot of organizations took that hit. But those organizations who took care of their employees are now the ones whose employees are now taking care of the organization. So I think generally every this HR domain is, I think ये थोड़ा सा हमसे लोग नफरत भी करते हैं और प्यार भी करते हैं डिपेंडिंग कि आप किस साइड पे हैं. But more or less I believe there, I don't see there a lot of shift or paradigm shift in any industry, to be honest. Okay. अच्छा, stories are how we make sense of our world. आपके लिए challenge time है. You gotta keep me and my audience engaged with your most favorite story of all times. कोई भी topic pick कर लें. कोई ऐसी story सुनाए जो engaging भी हो और rich in content और lessons भी हो. Thank you very much for asking this question. And मेरी बेगम मुझे कहती है कि आप बहुत कहानीबाज है. तो I Oh, think for me great. it's probably easy. Uh, I'm not sure. I'm not sure if I can live up to everyone's expectation. But yeah, so this is one of my favorite stories I share in my trainings as well. Around those times back in US when जब काले गोरे की जंग थी, black and white की, so there was a seller, balloon seller, who was standing at one of the junctions and he was selling balloons. And when kids would come, तो वो बैलून्स लेते थे, चले जाते थे. सो जब वहाँ पे बच्चे नहीं होते थे तो किसी एक कलर का गुब्बारा हवा में छोड़ता था, बच्चे आते थे, गुब्बारे लेते थे, चले जाते थे. एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज कि जब गुब्बारा छोड़े तो लोगों को, बच्चों को पता लगे इधर गुब्बारे वाला है, तो वो आते थे. इसी तरह से उसने पहले लाल कलर का गुब्बारा छोड़ा, बच्चे आए, गुब्बारे लिए चले गए. फिर उसने सफ़ेद कलर का गुब्बारा छोड़ा, बच्चे आए, गुब्बारे लिए चले गए. उसने ब्लू कलर का गुब्बारा छोड़ा, बच्चे आए, गुब्बारे लिए चले गए. तो ये सब कुछ पास खड़ा एक अफ्रीकन ब्लैक बच्चा देख रहा था. वो उसके पास आया और उसको आके कहता है,
कि अगर तुम एक काले कलर का गुब्बारा छोड़ोगे तो क्या ये भी इसी तरह हवा में ऊपर जाएगा जैसे बाकी रंग के गुब्बारे ऊपर गए हैं? रिमेंबर दिस इज दैट टाइम वेयर ब्लैक एंड वाइट की जंग है, तो यू नो दे फेल्ट सर्टेन हम्म। वे। तो उस गुब्बारे वाले ने उस काले गुब्बारे का धागा पकड़ा, उसको छोड़ा, और जब वो हवा में गया, सो ही गिव हिम द लेसन दैट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। ही सेड it's not what is outside this balloon, but what is inside this balloon that takes this balloon in the air, the gas, right? It's not the color. So, my lesson, my takeaway is it's not how you look, it's not what kind of colors, clothes you wear, it's not what kind of home you live in, what kind of ride you have, it's four wheels, two wheels, or you use public transport, because it's not what is outside of you, but what is inside of you and what is inside of you. ये दो चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि आप ज़िंदगी में कितना ऊपर जाएंगे। And this is one of my favorite stories I would like to share. I shared with you all. दैट्स सो नाइस, दैट्स सो गुड। अच्छा, लोग जहाँ हैं इब्राहिम वहाँ खुश नहीं है, कहीं पे भी कोई भी उदासी लेके बैठ जाते हैं, ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज वाइनिंग, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। बट यू माशाल्लाह वेरी कंटेंट इन व्हाट यू डू वेर एवर वेन एवर। क्या सीक्रेट है इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करने का, क्या राज है? So I think I went through my own journey. I took my own time for this, and just for everyone's benefit, I would like to share that from November 2019 to 31st December 2023, हम्म। 2022. For those 3 years, I had my depression phase. I had my emotional burnout because my work involved a lot of traveling. I used to do all these programs, a lot of human interaction. And then my therapist said me this thing. She said कि आपने बाहर इतना काम किया है कि अंदर आपने बल्ब भी नहीं जलाया, वो तार ही नहीं जोड़ी हुई। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी ये बात है कि हमारे यहाँ हमेशा खुशी नेक्स्ट स्टेप पे होती है, ये शायद ह्यूमन नेचर भी है। वो ये होती है कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू गेट अ सर्टेन गैजेट, मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से लोग शायद खुश नहीं हैं, बिकॉज़ दे प्रेफर एक्सटर्नल वैलिडेशन ओवर सेल्फ एक्सेप्टेंस। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन। अगर आप 100 में अच्छे नहीं तो आप 1000 में बुरे भी नहीं होंगे। आपको और मुझे बनाने वाले से कभी गलती नहीं होती, उसने आपको मुझे बनाने में कभी कोई गलती की नहीं। ने भी कोई गलती नहीं की। सो माय पॉइंट बीइंग, व्हेन यू टाइड विद ए थिंग्स कि जब मैं इस जगह पे जाऊँगा, जाऊँगी, अब आप देखें वो एक्सटर्नल वैलिडेशन या नीड फॉर सिग्निफिकेंस से होता ये है कि मैं वो कपड़े पहनना चाहता हूँ, वेदर आई कैन अफोर्ड इट और नॉट। मैं वो गैजेट्स रखना चाहता हूँ, मैं वैसा म्यूज़िक सुनना चाहता हूँ, मैं उन जगहों पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे बाकी लोग जा रहे हैं, so they all could see कि I am relevant. उससे होता ये है, if I can't afford it, I'll take loans, I'll borrow money, and I'll do all those sort of things. So my point being कि if you prefer self-acceptance, you take your time, you work, and this is one thing I learned from one of my friends. He said कि if you really want something, tie it to a goal or an objective. कि यार मैं हम्म। जब ये चीज़ अचीव कर लूँगा तो then I'll buy this, even if it's a gadget or anything, then I'll go for this kind of a trip. एक तो वो चीज़। तीसरा हम्म। ये है कि अगर आप उस चीज़ में कंटेनमेंट में रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। वन ऑफ माय फेवरेट लाइन्स इज़, एंड सेकंड, you need to be able to distinguish between your needs and your wants. I need clothes, but I want LV or Gucci. That's a problem. So हम्म। I need connectivity, but I need iPhone, I need AirPods, I need iPad. That is want. और मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है कि ज़रूरतें फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशात बादशाहों की भी रह जाती हैं। So if you can differentiate up your needs and your wants, तो आप देखिएगा at the end of the day you need to wake up, you need to have three times, you need to have need clothes, you need to go to work, you need to do your job, you need to spend time with people you love. Life is very easy. It gets complicated when I start searching for these elusive things called my wants or my need for external validation. तो आप और तो इसलिए मुझे बहुत जगह से बहुत बैकफायर होता था, तो बट आई वुड गो टू सिनेमास अलोन, आई वुड ईट आउट अलोन, एंड आई वाज नेवर अफ्रेड टू बी अलोन। सो लॉट ऑफ दैट्स वन चैलेंज एज वेल। हम उस तरह के लोगों में, उस तरह के सर्कल में नहीं जाते अगर आप अकेले कंफर्टेबल हैं। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि अब गैजेट्स, अगर जब लाइट जाती थी पाकिस्तान में, लोग घबराए इसलिए नहीं जाते थे लाइट चली गई है, इसलिए थे कि तब तक 4G नहीं थे, इंटरनेट नहीं होता था, तो फिर मुझे लगता था मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। हम्म। जैसी लाइट आती थी, इंटरनेट आता था, तो स्टेटस जाता था, व्हाट अ लवली डे इट वाज, थैंक यू जोजो मोमो जोजो फॉर कमिंग, बिकॉज वी वांट टू टेल द पीपल हाउ गुड दे आर। माय पॉइंट, द बेस्ट टाइम दे आर हैविंग। माय Yeah. लास्ट एग्जांपल फॉर इट इज कि डोंट इवैल्यूएट योर सेल्फ वर्थ बेस्ड ऑन अदर पीपल्स ब्लेसिंग्स और ओपिनियंस।
बिकॉज़ उससे होता ये है कि अगर मैं आप अपनी सेल्फ वर्थ आपकी अचीवमेंट से से कंपेयर करूँगा तो आई विल सफ़र and Hmm. you would never know the people because I love to have deep conversations, long conversations, and I have realized a lot of people आप अगर उनकी आँखों की तरफ देखें वो चीखें मारते हैं वो they have their own problems everyone does. So my thing is keep it very easy, keep it very simple, and then trust this thing, trust the process, trust the journey और वो जो ऊपर बैठा है उस पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट करें. अपनी ब्लेसिंग्स को गिनें, आपको दूसरों के ब्लेसिंग से अपनी अचीव बिकॉज़ देखिए लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ रेस. Hmm. For example, if you are 30, I am 30, I can't say that you are successful in 30 and I am not. Why? Hmm. Because you and I, we did not have the same starting point. We will not have a same finishing point. We don't have same, we did not had same set of experiences, exposure, challenges, our upbringing, social conditioning. Everything is changed. तो जब मैं वो उस कंपैरिजन से हट जाऊँगा कि मैं 30 साल में नाकाम हूँ, मेरे साथ क्या हो गया, मेरे पास सबसे महँगा फ़ोन नहीं है, गैजेट्स नहीं है, कपड़े वैसे नहीं हैं, लोग Hmm. तो ऐसे हैं। आप ये जितने आपके आई डोंट वांट टू नेम इट बट इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, ऑन इंस्टाग्राम और टिकटॉक, व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग इज़ बिकॉज़ दे वांट टू fulfill their need for significance and that makes them do these things. So I think if you can hold your need for significance, work on self acceptance versus external validation, needs and wants में clear होंगे तो और फिर हमारा मज़हब भी हमें ये सिखाता है कि तुम शुक्रगुजार बनो तुम्हें और मिलेगा, हम शुक्र नहीं अदा करते. आपके पास अगर महंगी गाड़ी है तो आपकी हराम की कमाई है या आपने कहीं से पैसे ऐसे लिए वैसा किया या आपके वालदैन ने दी. मेरे पास है तो मेहनत की है. तो लोगों की खुशियों में भी खुश होना शुरू हो तो आपकी अपनी खुशियाँ भी अच्छी होना शुरू हो जाएँगी और आपको I अपनी can छोटी-छोटी चीज़ों totally में खुशी मिलना शुरू हो जाएगी. I can totally relate to you. I'm a happy person myself, and I feel like positivity is a choice and a practice. A lot of people are joining in fast. We're getting messages from all over. Thank you, my people. Please Sure. share what keeps you busy today. Now, Ibrahim, let's switch gears for a bit of fun and insight. We're starting the rapid fire round where the questions are quick, but the answers are full of wisdom coming from you. Are you ready? Let's fire away. Where'd he go? Assalamualaikum. I'm really sorry. Somehow my Okay, it's all right. So we're just switching gears for the rapid fire yeah. round. And I just wanted to know if you were ready so that we can fire away. Now I am. Ibrahim, are you ready? Yes, I am. Are you ready? That was my Yes. first question. Okay. My first question actually is any book that you intend to read but you haven't read yet? Put पढ़ी हुई है table paper. Yes, and it's ego is the enemy. It's the enemy. Okay. And what Yeah. does Ibrahim do when he wants a break? When he needs a break from everything? Depends. Uh, okay, so again, very unusual question. I'll call someone. मतलब like I said, मैं लाहौर से आता हूँ, तो हमें वहाँ पे मालिश का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है. तो probably Uh-huh. I'll अगर Oh, आई एम विद इन टाउन तो I'll like very मसाज या मालिश करवाऊँगा. और I'll drive myself on. इस्लामाबाद में रहने का प्लस पॉइंट ये है कि हमारी एक्सप्रेस वे इज़ वेरी नियर बाय. So I drive, I go there, take coffee, come back, spend 2-3 Mhm. hours, depending है कितनी break चाहिए. Or Okay. if I want break from solitude, then I'll go meet my friends and relatives so I can have my indoor uh, the human interaction कर सकूँ. So it depends. Yeah. आप आए कराची में बहुत सोशलाइज करेंगे हम लोग मुझे पता चल गया Done. है को पकड़ना है Done. मुझे अच्छा इफ यू Done. कुड हैव डिनर विद एनी हिस्टोरिकल फिगर कौन होंगे वो साहब या साहिबा Uh, पाकिस्तान से और इंटरनेशनली? कहीं से भी ले लें आपकी मर्जी है द वर्ल्ड इज योर इंटरनेशनल. oyster Okay, so अगर इंटरनेशनली होगा then probably Jim Rohn. ओके ओके Yeah. आपने पाकिस्तानी देना है या बस ठीक है पाकिस्तानी हुआ तो डॉक्टर अब्दुल सलाम. ओह अच्छा आपकी कोई प्राउडेस्ट अकम्प्लिशमेंट सो फार Um, I don't Still think so. getting I there. can. No, I don't think so. I can think of anything. A lot yet to be done, but probably the dice project that we did, and no, in fact, one that we were training in Balochistan, Quetta, and they yes. So that is one thing that people have started working. So there are stories that people have come back to me. But I think there are still many to come achievements in that sense.
One of the inspirational stories was I was doing a 5 days program for a development center. After the program, on the fifth day, one Hmm. of the participant came to me and said कि सर मुझे आपसे बहुत शिकायतें हैं, आपको मेरी ज़िंदगी में पहले आना चाहिए था, मैं पिछले 6 माह से अपने मरने की दुआएं कर रहा था, Ooh. आप लेट आए मेरी ज़िंदगी में, बट थैंक यू वेरी मच एंड वन डे यू विल हेयर अबाउट मी। मैंने उसको कहा कि अगर हो सकता है मैं पहले आता तो मैं इस काबिल ना होता कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे दिल तक पहुँच सकती। But wishing you all the best. And then one fine day, the person texted me that he opened the franchise of Mr. Cod and he wanted me to come on the opening. Same is one of a contact from Hyderabad. Around 6 a.m. I got a call and the person said, I'm about probably I'll commit a suicide in the next few hours. Can you help me? I just listened to the person. Now the person is sitting in US doing a very good job, earning very good amount of money. And by the way, I'm not connected with both of them anymore. Not that I don't want to, but again आपके contacts change होते हैं, phone change होते हैं. So these are two of the accomplishments that I still feel because मेरे बनाने वाले ने कहा कि किसी एक शख्स की भलाई करो तो ऐसे ही है जैसे तुमने इंसानियत की भलाई की। अच्छा, जबरदस्त। What is a hidden talent or skill that you have जो और लोगों को नहीं पता हो? आई थिंक वो लोगों को पता लग जाता है बट इट्स मना माय करते हैं? ओवरथिंक नो 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 माय ओवरथिंकिंग because my overthinking helps me to be very creative, imaginative, and problem solving person. And on the flip side of it was that I would got on a lot of negative tracks. So I've suffered with it for a time, for a long time. But now, Alhamdulillah, I just use it because I think a lot of these creative people, they are creative because they are overthinkers. Because the positive use of overthinking is that you can be more problem, you can Hmm. solve more problems, you can be creative, जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं जुगाड़ आप लगा सकते हैं। तो बट Hmm. वो जिनके साथ जिनका भी मेरे साथ एक थोड़ा सा रीजनेबल सा कांटेक्ट होता है उनको पता लग जाता है कि आई एम एन ओवरथिंकर बिकॉज ऑफ द एंड आई गेट मोर क्रिएटिव स्पेशली व्हेन एंड आई यूज इट फॉर सेशन डिजाइंस प्रोग्राम डिजाइंस एज वेल सो या कोई बाकी जो travel, मेरा ह्यू सॉरी बोले आप, कंप्लीट करें। बाकी जो ह्यूमर बात है लाइक आई हैव डन पंजाब स्टेज जो लोग पहले तो बहुत बुरा समझते थे लेकिन जब से वो टीवी पे आना शुरू हुए तो सबको आर्टिस्ट अच्छे लगने शुरू हो गए सो लॉट ऑफ पीपल यूज टू से कि तू थिएटर पे क्यों नहीं जाता तो मैं यही कहता हूँ मैं वही सीधर आया हूँ तो वापस नहीं जा सकता ओके। कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन जो आपकी टॉप बकेट लिस्ट के टॉप पे हो? Travel destination, I don't think so. Man. I like to confine myself, but if I get a chance, to probably somewhere north in UK is the place I would Hmm. go. But If you or any place that has water. मतलब even if it's in Pakistan or बाहर, my नाइस, simplest is not कि वहाँ पे क्या क्या history और nature नहीं. अगर जहाँ पे पानी है, I would love to go there. कोई पॉजिटिव चेंज इन द वर्ल्ड इफ यू वांट टू मेक, तो वो क्या होगा? कोई एक। I would convince people to start accepting themselves as they are and stop looking for this something elusive called idealism, an ideal me, an ideal health, an ideal शक्ल आइडियल कलर सो उससे बाहर निकल के ग्रेटिट्यूड की तरफ मतलब वन पॉजिटिव चेंज वुड बी टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल मैं अक्सर आपने सुना होगा डेवलपमेंट सेक्टर की भी टर्म होती है कि लोग कहते हैं हम इनटॉलरेंस पे काम करें वी शुड टॉलरेट अदर्स आई थिंक टॉलरेंस अगेन इज नॉट अ चॉइस हम्म। acceptance is a choice. I should accept you as who you are as compared to I tolerate you. So I think acceptance is one thing that I would like to a kind of a change that I would want to bring in the world. Coexistence. कोई अपने फेवरेट दो मेंटोर्स का नाम बताएं और वाई भी बता दें। Sarma Tariq, again, he passed away in 2014, one of my all-time favorites. मैं उनके बारे में हमेशा ये कहता हूँ वो खुद शायद नहीं चल सके लेकिन उन्होंने मेरे जैसे बहुत से लोगों को अपने पाँव पे खड़ा होना और ज़िंदगी की दौड़ में भागना सिखाया एंड सेकंड इज़ जिम रॉन फ्रॉम यूएस अगेन जिनका मैं अभी एग्जांपल भी दे चुका हूँ सरमत भाई का इसलिए अगेन उन उस शख्स में जब मैं उससे मिलता था तो वो आप उनसे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स लेके जाएं 5 मिनट में वो सारा कुछ उतार के साइड पे रख देंगे और वो आपको बताएंगे वाई इट्स योर फॉल्ट व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग इन इट वो आपको सिंपैथाइज नहीं करेंगे आपको विक्टिम माइंडसेट से को हिट करेंगे डायरेक्टली वो आपकी स्टोरी को बाय नहीं करेंगे इट्स लाइक यू आर द प्रॉब्लम मैं एक दफ़ा बताता हूँ उनके लास्ट डेज से फॉर द लॉन्गेस्ट अबाउट गुड 6-8 मंथ्स ही वॉज ऑन बेड और उनके पास एक आई वोंट नेम द सेलिब्रिटी एक सेलिब्रिटी की वाइफ आई और वो आके कंप्लेन करी है मैं कराची में थी ये मसले थे स्ट्रीट क्राइम सब कुछ
तुमने मुझे कहा सरमत दुबई चल जाओ, अरे सरमत भाई इस वक्त बेड पे सीधे लेटे हुए हैं। वो 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे सीधा बैठते थे, खाते थे या कोई काम करते थे, और उसी में अपनी पोस्ट डाल देते सोशल मीडिया की। ही वुड यूज हिज लैपटॉप विद दिस। तो फिर मैं दुबई गई, वहाँ एक्सपेंसिव बहुत है, ये है वो है, तो अब मैं वापस इस्लामाबाद आई हूँ, तो ये डल है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो सरमत भाई सुन रहे हैं, और सरमत भाई ने कहा 1 मिनट रुको। उसके बाद सरमत भाई ने बेल बजाई, अपने अटेंडेंट को बुलाया और उनको इशारा किया, एंड उनको समझ नहीं आई, तो वो अटेंडेंट आया, अटेंडेंट ने उनकी चेस्ट पे 2 दफ़ा प्रेशर दिया और सरमत भाई ने खांसी की। उसके बाद सरमत भाई उसको कहते हैं, हाँ तो तुम बता रही थी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मसले हैं। तो वो खामोश हो गई। तो वो कहते हैं कि मुझे खांसी लेने के लिए दूसरों के सहारे की ज़रूरत है, और तुम्हारा मसला ये है कि सोशलाइजिंग नहीं है, लाइफ नहीं है, अगेन जो हम पहले बात कर रहे थे हैप्पीनेस की। Hmm. तो वो रोज़ एक ही टाइम पे अपनी सोशल मीडिया पोस्ट डालते थे। तो मैंने उनको एक दफ़ा कहा, मैंने कहा सरमत भाई, ये आपकी जब रोज़ एक ही टाइम पे पोस्ट आ रही है तो लोगों को लगता है कि आप ठीक हैं, बट दे डोंट नो व्हाट यू आर सफरिंग, बिकॉज आई वाज मीटिंग हिम फ्रीक्वेंटली। तो Hmm. आप यही पोस्ट डालने की बजाय 30 सेकंड्स वीडियो बना दें, सो पीपल नो व्हाट कंडीशन यू आर इन। Hmm. एंड ही सेज कि ये काम तुम जैसे शोधे लोग करते हैं, जिनको लोगों के लाइक्स और कमेंट्स की ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। और उसके बाद द लास्ट लेटर दैट ही रोट टू गॉड वेंट वेरी वायरल एज वेल। सो या दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई, बिकॉज उन्होंने, वो कहते हैं ना, दिमाग खोल के ब्रश मार के तेल से लगा के वापस जो है दिमाग ऊपर रख दिया सर। तो उससे Hmm. सोचने की चीज़ें काफ़ी बदली, एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई आई कुड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज हु आई एम। Wow. Thank you, Ibrahim, for your time, stories, and thoughts today. Would you like to add something else? Anything that you think we may have missed? Not at this stage. If they, I think we have already, I have already taken a lot of time. But if there is any questions that we have got or you want to ask, so please do Well, that. I'd like Otherwise, to add I'm fine. this one: How to engage large scale audience with energizers. Any source or your methodology by Zishan Wani. How to engage large scale audience with energizers? Again, energizers के लिए तो सबसे पहले एक चीज़ ये है ज़िशान, कि you have to make sure कि वो culturally appropriate हो, especially in the larger groups. And also you need to understand there's a difference between an icebreaker and an energizer. So आप अगर उस चीज़ को bifurcate कर लें तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आपने कैसे करना है। Icebreakers are just, you do it at the start of the session to build that rapport. People can, break those ice. They can connect with you and also with each other. Energizes is again, you can use laughter, humor as well. You can, and by humor I mean, humor is not always about cracking a joke. Sometimes you can highlight an unusual aspect of anything that's being discussed, and that generates laughter. Then there are a lot of activities that you can do as part of energizer. उनका कोई outcome उसमें से नहीं होता, but if you can build it in a way that your pitch previous session and the next session is connected and they serve as a bridge, that is also one thing. Thirdly, a lot of people now, both in corporate and development sector, have been through a lot of trainings. They have been through a lot of programs. That is where you can encourage participation and ask someone if anyone wants to do an energizer. I'm telling you, you'll be surprised how many people want to show up on the stage. They want to take the stage. They want to take them, hold the mic. They want to conduct that activity. Sometimes, if you can't think of any good energizers, you can use your audience as an energizer. Music is one thing as well, so they can come on the stage and they can, conduct an activity for you. So use your audience as a tool as well. Do you want to take another question, or should we end this? I I'm okay. आप, मैं मेहमान हूँ, मेहमान जो है वो बेजुबान होता है। You are the मेजबान, you tell. बस एक और, ये मुझे समझ में नहीं आया था सवाल, लेकिन maybe you're able to get it. It says when young trainers go in the corporate sector, do not recognize, corporate sector doesn't recognize them as a trainer. How do you deal with this? Has this ever happened with you? They don't recognize as a trainer. How to deal with it? Then become one. And also, a lot of time people confuse training as someone who has all the answers. Please don't act like this. Hmm. Initially, this is what I did as well. I used to volunteer. So when I what you say, I जब volunteer करता था तो I built that credibility, and that is when I started full time. A lot of those organizations used to have me as a volunteer. They started paying me for those gigs as well because they saw me in action. डेल कार्नेगी की एक बहुत फेमस सेइंग है, एक कार्नेगी हॉल भी है दुनिया में, पब्लिक स्पीकिंग के डोमेन में, a lot of public speakers aspire to do a session in Dale Carnegie Hall.
तो वो ये कहता है, यू हैव टू स्पीक इन 100 वेडिंग हॉल्स बिफोर यू कुड स्पीक एट अ कार्नेगी हॉल, राइट? So this is one thing that tells you about preparation, practice, and also it helps you building your credibility. Third, don't go to offer any solution. Go networking पे ध्यान रखें, because all join all these HR forums, networking events, conferences. हमारे यहाँ ये भी होता है, हम जिन इवेंट्स पे जाते हैं, कॉन्फ्रेंसिस पे जाते हैं, हम जिन लोगों के साथ जाते हैं उन्हीं के साथ चेक इन करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, वापस आ जाते हैं. Exchange cards, get people's card, follow up with them on LinkedIn, write them an email, and don't make it a transactional interaction, please. Don't say I'm a trainer. Don't say I want to train. No, if you do that, I will make up my mind even I want to meet you or not. Make it human based and meet people and try to listen to them. अच्छा, आप क्या करते हैं, आपका अदारा क्या करता है, आपका जॉब रोल कैसा है, क्या चैलेंजेस हैं. अब तो ट्रेनिंग्स इतनी होती हैं, आई एम श्योर आप लोग भी करवाते होंगे, तो आप किस तरह के प्रोग्राम्स कराते हैं, उनसे क्या आउटकम आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या हो सकता है, थिंग्स लाइक दैट. So your first 3 to 4 interactions should be non-transactional. The moment they say you, it's like what people does in sales, right? You get a call from a bank, you know that the person would sell you either an auto loan, home loan, or a credit card, right? Don't want to take the call. Same is with insurance. So you have to. So it's also called relationship selling. I usually do that. I don't want to in my first interaction tell people, oh मैं ये करता हूँ, आपने बताया कुछ करवाना है. No, let them see the human side of you first, build that connectivity, that circle, and then connect with them on social media. फिर उससे होता ये है, if you use LinkedIn properly, you can connect with other people. When they see कि person A, person B is on your LinkedIn, तो they think कि यार ये बंदा ठीक ही होगा. Then also share quality content on your profile, because this will help understand your audience कि यार ये बंदा बात अच्छी करता है. It could be your reels, your shorts, or some other content जो लोगों का है with respect to trainings. Share those articles, and because this is how you build your credibility even before you step into the office of that HR director or manager. और जब ठीक है. आपके ज़हन में ये नहीं होगा कि मैंने ट्रांजैक्शनल इंटरेक्शन करना है, तो आपकी पूरी कन्वर्सेशन चेंज हो जाएगी. सो प्लीज फोकस ऑन दैट. Okay, thank you so much, Ibrahim. From our tour tribe next Welcome. week, we will have with us Zidan Khan. Mind you, he's my best buddy, and you got to be there to enjoy his insights on learning and fun sessions. My most favorite part of the show is my audience. Thank you for your engagement and curiosity. Please reach out to us to engage our talk tribe experts for your learning interventions. You will see our contact details down here. Please keep chasing those thoughts, and remember, every step in our quest is a story in itself. So hold that thought. Until next time, keep thinking, keep questioning, and never stop exploring the who that leads to the what. This is Sarah Mashhood, turning it off. Thank you and goodbye. तन्हा ऐसे क्यों बेचैन फिरे जागेंगे जरूर ये भाग तेरे. कोई जानना ये जोश तेरा, कोई जानना जुनून तेरा. घूमता ना ताना ना ना ना, घूमता ना ताना ना, घूमता ना ताना ना ना ना, घूमता ना ताना